Thank you very much, dear students, for joining me in the last session. Inshallah, this would last for a longer period of time. So that means this is not the last lesson. And this session would be plus slow and gradually we will proceed. What we are doing, usual जो proceedings होती थी हमारी, we will not be doing that in haphazard or jaldi mein. But I'm mainly interested to say थैंक यू वेरी मच एवरीवन जो इस कोर्स में पार्टिसिपेंट था आज के दिन में वी हैव डिवाइडेड दिस लास्ट सेशन इनटू टू पार्ट्स वन इज जिसमें ये लेक्चर मैं दूंगा एंड दैट वुड बी अ काइंड ऑफ मोटिवेशनल लेक्चर एंड द सेकंड लेक्चर आप सब लोग देंगे सब लोगों को correct. So the lines are open for everyone whosoever is interested in saying with an open heart, I'm 100% willing today and ready today to accept all those lacknesses, all those weaknesses जो कि मेरे अंदर थी, या अगर आपको कोई किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नज़र आई जिसको हम अपने एंड पे, मैं अपने एंड पे या इंस्टीट्यूशन अपने एंड पे इसको रेज कर सकता था, टुडे इज़ द डे. And honestly, I'm telling you, recording has been on. जो कुछ आप कहेंगे without any cutting, I will upload that to the whole world. There are approximately 550 subscribers of Institute of Freelancing channel, and the aim is कि इंशाल्लाह हम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने बैठे हुए वो तमाम लोग जो कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अपने आप को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने ब्रांड को, या कंबाइनिंग ऑल टुगेदर द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, अगर इसको रेज करना चाहते हैं, सो योर ऑडियो, योर मैसेज विल रीच टू ऑल ऑफ देम. Correct? So let's start our today's first session, and that is from my side. And when I'll say कि अब now it's time for you to start, that would be the time कि आप hand raise करेंगे, और hand raise करने के बाद what I'll do is that I'll unmute everyone जो जिसको मैं नाम लेता जाऊंगा, and I just want कि 1 or 2 minutes के अंदर अंदर you have to conclude this whole thing. So the interesting story or the conclusion story of this whole session starts from a small lesson कि एक शख्स गुजर रहा था किसी जगह से, and he found out that एक elephant means सबसे बड़ा animal approximately इस time पे कुरे अर्ज पर, he has just been caught by a rope जो उसके पाँव के साथ एक रस्सी बंधी हुई थी, एंड दैट वाज जस्ट एक स्मॉल सा एक लकड़ी का एक काइंड ऑफ फिक्सन हुआ था इनटू दी मड, और बिल्कुल ज़मीन में, और वो उसके साथ बंधा हुआ था. ही वाज स्टिल स्टैंड स्टॉल, ही वाज डूइंग नथिंग. एंड वो बड़ा हैरान हुआ कि एक शख्स उसके साथ बैठा हुआ है एंड जस्ट डूइंग नथिंग. एंड वो हैरान होकर देखता रहा कि सच अ ह्यूज एनिमल, कि ये अगर एक इशारा भी करे तो ये जो एक लकड़ी का छोटा सा डंडा जो ज़मीन के अंदर फिक्सन हुआ है और उसके साथ वो रस्सी उसके पाँव के साथ बंधी हुई है, वो ना सिर्फ उस रस्सी, उस लकड़ी के पीस को, बल्कि उस शख्स जो कुर्सी पे उसके साथ बैठा हुआ है, एक ही लम्हे में उसको उठाकर कितनी दूर फेंक सकता है. इट्स सच अ ह्यूज एनिमल. बड़ी देर वो सोचता रहा दैट हाउ इज इट पॉसिबल दैट दिस मैन or this animal is not doing, कि उसे हल्का सा इशारा चाहिए. एंड वो थोड़ी देर सोचता रहा, and then he reached to that man and he asked, dear sir, what exactly is the problem with this animal? Don't you know that he is such a big animal, the world largest animal, और उसके साइज का आपको अंदाजा ही नहीं लगा सकते. एक शख्स उसके पास खड़ा होते वक्त लगता है such a huge thing, and he just fixed with that small rope. How it is possible, ये क्यों नहीं कर रहा? तो ही जो ओल्ड मैन जो उसके साथ बैठा हुआ था, उसने हंस के उसे कहा कि इट्स अ मैटर ऑफ बिलीफ. जब ये छोटा था तो हमने इसके माइंड में ये चीज डाल दी, once you are fixed with this rope, you are not supposed to move anywhere, you cannot actually move anywhere. So शुरू में वो थोड़ा थोड़ा, जब छोटा बच्चा था तो वो जोर लगाता था, लेकिन जोर लगाने पे वो गिर जाता था. So at the end of the day,
ही हिमसेल्फ रियलाइज कि नो आई कांट डू दिस, लेकिन वक्त के साथ साथ वो बड़ा होता रहा और करते करते इतना ह्यूज जॉइंट बन गया। सो और उसके माइंड में ये चीज़ बैठी कि नो, अगर ये मेरे साथ रस्सी बंधी हुई होगी, सो आई विल नॉट बी एबल टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम दिस रोप। So, when they are very young and much smaller, we use the same size rope to tie them, and at that age, it's enough to hold them. As they grow up, they are conditioned to believe they cannot break away. They believe the rope can still hold them, so they never try to break free. माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला ने इंसान को और हम तमाम को वो तमाम सलाहियतें दी हैं कि आप जिस टाइम चाहें, जिस वक्त चाहें, अपने इस बिलीफ को एक नए लेवल तक लेके जा सकते हैं। दैट्स व्हाट द होल मोटिव ऑफ दिस कोर्स, जो हमने स्टार्ट किया approximately a month back on 16th, yeah, probably 15th of last month, or karte karte we have reached today. That's almost the conclusion of this whole class. Lekin the end story was to give you that level of confidence कि जो शख्स ये बिलीव करता है ना कि नो आई कांट डू दिस, सबसे पहले वो फियर फैक्टर आप में से ख़त्म करें। सबसे पहले वो फियर फैक्टर आप में से ख़त्म करें। दैट्स हाउ एक्चुअली दिस इज द बिलीफ। जब आप काम करते हैं टू द होल वर्ल्ड, आई मीन वी गैदर्ड फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। आज हमारे साथ अराउंड 28-29 पार्टिसिपेंट्स आर एक्चुअली listening this whole word and this whole story and this whole class, and ये बिलीफ आप सब में आ जाएगा इंशाल्लाह अब, कि जो जो आप आज से एक मंथ पहले सोच रहे थे, यू आर फार अवे फ्रॉम दैट फियर फैक्टर नाउ। दिस बिलीफ इन योर सेल्फ कि नाउ यू कैन डू इट, यकीन करें अगर आज ये बिलीफ आप में आ गया, अल्लाह ताला इंशाल्लाह इससे आगे अब आपके लिए रास्ते ओपन करना शुरू कर देगा। Regardless you are graphic designer, regardless you are fashion designer, you are interior designer, you are web designer, or whatever, these smaller things, these smaller tools and techniques are way too smaller as compared to your brain, your mind and your thinking process. आप थिंकिंग प्रोसेस को बढ़ाते जाएं, जितना बढ़ाते जाएंगे ये बिलीफ आप में 100% उसी तरीके से बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। एंड दैट इज द ओनली थिंग जो तमाम के तमाम दुनिया में बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो तमाम के तमाम अपने स्टूडेंट्स में ये बिलीफ पैदा करते हैं। एंड टू गिव यू जस्ट अ वन मोर एग्जांपल, इज देयर एनीवन हु नोज दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है? Institution, university. Is there anyone? Just send me into the chat box, Khan. I know you know that. I know you know that. Oxford, Harvard, yes. Stanford is the one which I'm expecting the answer from everyone. Stanford University का ये basically उनके अंदर ये चीज़ they actually put in that belief into everyone कि जब आपने यहाँ से निकलना है, यू हैव टू गो टू द मार्केट फॉर द होल वर्ल्ड, यू हैव टू सर्व टू द होल कम्युनिटी। सो द आइडिया इज नॉट जस्ट कि आपने कोई छोटी सी चीज़ सीखी और वहाँ पे अपने आप को स्टॉप किया एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस दैट स्मॉलर थिंग, करेक्ट? बहुत सारे स्टूडेंट्स आपकी क्लास में ऐसे हैं, दे ट्राई टू कॉन्टेक्ट मी, दे आर इन डिफिकल्ट सिचुएशन। You got to believe me on this, my dear students. Nothing. Don't believe in this thing. कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इंसान के सामने वो मुश्किल नहीं है। You can achieve to that higher to higher to higher to higher states, right? So the conclusion story of this whole chapter is कि जिसने ग्राफिक डिज़ाइन सीखा, जिसने अपना टारगेट फाइबर बना लिया, वो यकीन करें फाइबर पे जाके अपने आप को रोक लेगा। जिसने उसके बाद अपवर्क पे अपने आप को अपना टारगेट सेट कर लिया, यकीन करें कि वो वहाँ पे जाके रुक जाएगा। जिसने अपना ब्रांड बनाया एंड ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिज ब्रांड्स,
if he believes that now these classes are closed, means there is no kind of motivation or there is no one who is actually to guide them, yaqeen karen that would be your last chapter, that would be your last thing. So first and foremost, what you have to do is you have to keep on struggling. Inshallah, aane wale time mein, that's my promise to my every class, and that is how from the batch one, batch two, batch three, batch four के तमाम students they are still in contact with me. करेक्ट, यूजुअली मैं उनमें से जो टॉपर्स होते हैं, जो हाईलाइटर्स होते हैं, उनको मैं इनवाइट करता हूँ टू गिव देम मोर कॉन्फिडेंस. So this is the belief first and foremost you have to build in yourself. Then you have to show this to the whole world. For example, let me pick up any of the name and मैं उस name के साथ start करता हूँ. Let's suppose there are so many prominent names, right? आई जस्ट नॉट वॉन्ट टू नेम एवरी वन, लेकिन इनमें से मैं कोई एक लेट सपोज अगर मैं चुनना चाहूँ तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम. ओ ओ, तो जैनुलैन जो सबसे एक्चुअली बॉटम पे है, शी इज़ द वन जो कि बहुत प्रोमिनेंट है इस क्लास में. एट द सेम टाइम Rubab is there. Rubab was actually prominent. Alia, amazing. Saima, Rida, and Kuratulan, and I don't know where is. Okay, there is Manahil also. There are so many students. Manal also. There, I just do not want to specifically name anyone, but you got to believe me on this. इनमें से किसी एक का मैं नाम उठाऊं, अगर मैं उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करूं, सो यकीन करें कि वो ही एक्चुअली टेम्पलेट्स है, वो ही सारा कुछ हमने हर किसी के ऊपर रेप्लिकेट करते जाना है. सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि जो आपके स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, आपके स्पेसिफिक नाम के साथ चलेगा. करेक्ट. फॉर एग्जांपल, रुबाब सॉरी जैन ने अपना ब्रांड गुले यास के नाम से बनाया. That's a huge accomplishment for me and for this class and for herself also, कि वो पहले से कुछ ना कुछ काम कर रही थी, but this class will give her a platform जिससे उसने जाके उसको और ज़्यादा स्पीड से प्रैक्टिकली एंड वो सारी की सारी चीज़ें उसके ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दी जो कुछ उसने यहाँ से सीखी. Correct. The same application goes to everyone. For example, I just want another name. For example, Alia is serving into the hospital. Correct. But that hospital needs a lot of services like graphic design and publishing and printing and advertising, and sky's the limits. आप कोई एक टॉपिक उठाएं, कोई एक नाम उठाएं, and you might not fix that only one thing कि शायद उससे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है. That is 100% rare there. इसके अलावा there are so many names. For example, Khansa is there, yes, and Nurul Huda is there, and there are some of the students. For example, Asfand Khan is there. Oh, what a unique personality. AK, Azra Ayub, AA, Anam Fatima, Eman Murad. Wow, amazing. Afroz, Abdullah Khan, Ahsan Ayaz. माशाल्लाह इतने, एंड जवेरिया itself, माशाल्लाह इतने बड़े नाम, एंड फरा सईद. आई जस्ट डू नॉट फिक्स एनीवन, या किसी एक का नाम मैं मिस नहीं करना चाहता. फिजा उल फार्म, हाद खान इज अ यंग चैप, बिल्कुल. लेकिन आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद हाद खान, लेकिन जब मैं आपसे कहूँगा हाद, तो प्लीज उस टाइम पे यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड वी विल हैव अ जस्ट स्मॉल चैट सेशंस. ठीक है. These are mashallah now becomes icons. Let me give you the name. You became icons now. Correct. And the idea is not this कि आपने कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़, कोई एटम बम का फार्मूला बना लिया, that's the only way you can reach to that stage. No, the idea is कि now your brain has started working, your mind has set into that level कि now you can think from yourself, and not only think from yourself बल्कि आप एसोसिएट करते हैं डिफरेंट चीज़ों को अपने ब्रांड के साथ. फॉर एग्जांपल, गुले यास इज़ द ब्रांड. मैं आज भी देख रहा था, आई हैव फाउंड अ गिफ्ट फ्रॉम जे डॉट, और आई जस्ट नॉट वांट कि मैं किसी ब्रांड का नाम लूँ, लेकिन मैं उसको रिलेट कर रहा था कि व्हाट इफ़ कि अगर मैं ये ब्रांड अपने स्टूडेंट्स के सामने रखता, और आई जस्ट वांट टू गिव देम दिस एग्जांपल कि लुक एट दिस.
कि अगर इस चीज़ को जे डॉट के अलावा अगर आप गुले यास में कन्वर्ट करें, व्हाट एग्जैक्टली कुड बी द आइडियाज जो आप फिट इन करेंगे अपने ब्रांड के साथ। एंड फॉर एग्जांपल बिल्कुल इस तरह ही असफंद खान, बिल्कुल ऐसे ही कोई और खंसा है, एंड मैं किसी को नाम स्पेसिफिक अगेन सबका नाम नहीं लेना चाहता। सो यू कैन थिंक फ्रॉम योर सेल्फ, either you can start your own thing or you can associate with someone जो कि ये ऑलरेडी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल फराह, मैम फराह इज सिटिंग इन सऊदी अरेबिया, उनके तो एसोसिएटेड इस टाइम क्लोज कोई ऐसा क्लोज उनके पास करीब करीब ऐसा कोई नहीं है, बट यू गॉट टू बिलीव मी ऑन दिस, यही चीज़ें हमने इस ड्यूरिंग दिस होल कोर्स आप में इम्पार्ट करने की कोशिश की, दैट दिस होल वर्ल्ड इज बिकम नाउ ग्लोबल विलेज। यू कैन कोऑर्डिनेट एनी वन एनी टाइम इन फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कॉस्ट वाला फैक्टर बिल्कुल आप निकाल दें। So that's how you can bring the quality into this teaching, into this learning, into this course, into everything जो कुछ आप बनाते जा रहे हैं। At the same time, let me give you another idea. Today I have gone through another huge brand of Pakistan, Diners. Diners, has ever heard this name? Diners. Diners की पूरी एक chain थी. What they come up with something like this कि a cousin of me who actually came with just to show me कि it's a huge brand and I have purchased a couple of things from them. And then I went to their shop. They actually asked me कि आप किसके लिए किस पर्पस के लिए आए हैं। तो आई जस्ट टोल्ड हिम कि आई केम हियर फॉर दी क्या कहते हैं वॉस्केट टाइप सॉर्ट ऑफ थिंग जो कि आने वाले सीजन में उसको जरूरत पड़ेगी कुछ। So someone told him कि sir basket के साथ you must have to have some accessories also. So what if I offer you 30% डिस्काउंट और अगर आप मैं ये चीज़ें सारी की सारी accessories आज देखना शुरू कर दूँ। So at the end of the day he bought the total complete products। एक basket के बजाय he bought around 6, 7, 8 different things that includes shoes, that includes jeans, that includes basket, that includes a shirt and one perfume and things like this, and he bought that in 18,000 rupees। So just based on this कि these are the things जो कि brands के साथ associate होती जा रही हैं। So I just asked how is it possible the diners is dealing in so many things, and they said now they are dealing because they believe in this thing कि उनके साथ associated जो भी बंदे हैं उन तमाम के पास ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट हो सकती हैं। सो दे स्टार्टेड अप विद समथिंग लाइक दिस और करते करते they have reached to this stage that now they are offering to their valued customer so many things। So these are just the simple ideas जिनको आप अपने सामने रखते हुए you can start working for your brands, और अगर अपने ब्रांड्स के साथ नहीं तो किसी भी ब्रांड्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल Afroz and Asan and Had Khan is working with Asfand Khan, so that means you are associated with them। So again, the last yesterday's chapter, the last chapter, last class थी उसमें the one I concluded the lesson कि एक एक होता है और एक दो नहीं होते बल्कि एक और एक 11 हो जाते हैं। You got to believe me on this। और इस तरीके से हम करते करते आहिस्ता आहिस्ता we move to the next letters। So dear students, ये था हमारा आज का last but never the least। inshallah this will not be the last, and inshallah this will last for a longer period of time, और इस तरीके से हम उसमें चीज़ें ऐड करते जाएंगे, and I will always be there for your help, for your assistance। चाहे आप ग्राफिक डिज़ाइन के हैं, चाहे आप फैशन डिज़ाइन के हैं, चाहे आप इंटीरियर के हैं, चाहे आप वेब के हैं। सो मोरल को जब तक अप रखेंगे अपने, अल्लाह ताला आपके लिए सब कुछ आसान कर पड़ेगा इंशाल्लाह। आई विल नेवर लीव अस, ये स्टूडेंट्स होते हैं जो कि लीव कर देते हैं, दैट्स माय कमिटमेंट। अच्छा जी, सो हाद खान यू आर द नंबर 1 टुडे। हाद खान कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। So let's start one by one, and Yes, sir. good। And जो voluntarily speak करना चाहते हैं, I just want कि सारे के सारे hand raise करते जाए so that कि सबसे पहले मैं उनसे पूछूं और उसके बाद चलते चलते सबसे पूछता जाऊंगा। हाद खान और you are there। Yes, sir. बेटा आप कैसे हैं, ठीक हैं? Yes, sir. Alhamdulillah.
Perfect. And in which class do you read, man? Sir, in 7th class. Seventh class. And you are the most junior one. Do you know this? You are the most junior one who joined up this course. I don't know why have you joined us in this course. लेकिन अगर आपका ये बिलीफ अगेन एज एन बिलीफ पक्का है तो यकीन करें स्काई इज द लिमिट्स ऐसी है Yes, sir. 100%. Yes, sir. Inshallah, I just want कि I don't know, should I speak to you or should I speak to your father and mother who can actually give us, because आपका जो credit है, आपकी ये class join करने का credit, I'm pretty sure ये आपको नहीं जाता बल्कि आपके parents को जाता है, because I'm pretty sure कि उन्होंने Yes, sir. motivate किया होगा, यकीनन that's how you reach to the stage, correct? Yes, sir. Correct. You're true. Good, excellent. Had Khan, inshallah, you are very intelligent and keep on doing your best efforts. हमारे साथ बिल्कुल ऐसे ही join रहना and you will learn a lot of things. Pay my regards to your parents. अल्लाह ताला सबको ऐसे Yes, sir. जो अपने बच्चों को इस तरह की टेक्नोलॉजिकल गाइडेंस और टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज ये देते रहें. हाथ खान, दिस मैसेज इज फॉर योर पेरेंट्स, राइट? Thanks, sir. Thank Thanks. you very much. Bundle of thanks. Alia, please go ahead. This is your turn now. Alia, can you hear me? Assalamualaikum. Yes, walaikum assalam wa rahmatullah. First and foremost, let me tell you everyone that Alia is from Peshawar, and unfortunately she joined us a little bit late into the class, but I'm surprised कि जिस तरीके से इन्होंने with all those difficulties जो जॉब के साथ साथ थी इन्होंने फिर भी इसको कंटिन्यू रखा and she become an icon of this class. Alia, please go ahead. Now Sir, thank you so much, sir, for your kind words. अगर आपकी encouragement नहीं होती, day one से अभी मैंने class join नहीं की थी, तो उस time से अभी तक आप जो हैं मुझे जिस time पे भी, चाहे मैंने रात को 12 बजे आपको मैसेज किया है या मैंने आपको सुबह मैसेज किया, आपने हमेशा मेरे मैसेज का जवाब दिया है, मुझे गाइड किया है. मेरी असाइनमेंट्स हमेशा लेट हुई हैं. आपने कभी भी क्या नाम है मुझे ये नहीं कहा कि तुमने लेट असाइनमेंट सबमिट की है या कभी भी कुछ ऐसा नहीं हुआ. और जब भी कोई मसला हुआ है, आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू यू एंड यू हैव ऑलवेज गाइडेड मी सो वेल. सो आई एम रियली ऑब्लाइज्ड एंड आई एम रियली ग्लैड कि मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया एंड आई गेट टू मीट सच अमेजिंग पीपल जो कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जो इतने स्ट्रॉन्ग हैं. एंड यू एज अ मेंटोर जो सबको इंडिविजुअली टाइम भी देते हैं और हम लोगों की गलतियों को और जो हम लोगों की लाइफ के इश्यूज हैं उनको भी सॉर्ट आउट करते हैं. 100% एग्जैक्टली यू आर राइट कि ये जो मिस्टेक्स एंड ये जो चीज़ें हैं ना, these all are part of our life. ठीक है ना? There are so many students which were doing actually in this whole course, they were doing blunders. They were not doing mistakes, they were doing blunders. लेकिन at the same time the best efforts जो उनकी तरफ से put in हो सकती थी, as they were doing their best, so उसके ऊपर thumbs up से ज़्यादा बहुत कुछ बनता था कि at least they are trying. And I mean there is no worries at all. Inshallah ये जो keep on doing वाली efforts थी ना, ये हमेशा इसी तरह ही जारी रहनी चाहिए. Inshallah that will last. And my dear students, आलिया की तरफ से आपको एक छोटा सा सर्वे काइंड ऑफ फॉर्म that has been submitted. I'm pretty sure कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो मिल भी चुका होगा. And अगर नहीं मिला तो I'll forward that form to you also. That is just a review of myself, that how you find this overall course, how you find your teacher. And in this case I'm very grateful to Alia कि इन्होंने all the way जाके मुझे encourage किया, support किया. And this was actually a vice versa. It's not like कि मेरी तरफ से ही सारा कुछ था, लेकिन आप लोगों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा encouragement and support मुझे मिलती रही, जिसकी वजह से we have reached to this stage. Okay जी, thank you very much Alia. First of all, I'm very thankful to you कि आपने इतने अच्छे kind words use किए. और मैं इंशाल्लाह we'll stay in touch. That is my promise. Correct? Is there anyone who voluntarily wants to speak, or should I say anyone's name? There is one student during this whole course वो हमारे साथ नहीं बोली. आज मैं चाह रहा हूँ कि वो मेरे साथ बोले.
and that is, if I am not wrong, let me start with Tamkeen Rafiq. Is it Tamkeen Rafiq? Are you there? उसके बाद साइमा आमिर, and then उसके बाद plenty of others. Tamkeen Rafiq, I just want you to please unmute and join me. And in between, अगर Tamkeen join नहीं कर पाती, so I would request Saima Amir. Are you there? अस्सलाम वालेकुम सर। Yes, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. So finally हमने आपको मजबूर कर दिया बोलने पे. नहीं नहीं ऐसे क्यों? Okay, great. First of all, Tamkeen आप कहाँ से थी? फ्रॉम कराची। Karachi. So that is, I totally understand, and I'm sorry for my using some odd words, hard words. I totally understand in such a situation in which you are during this whole month. ये गिला आपसे बनता ही नहीं है. Correct me if I'm wrong. ओके सर। Correct. So that means कि इंशाल्लाह तमकीन, आई टोटली अंडरस्टैंड, आप लोग आप स्पेसिफिकली अगर क्लासेस नहीं अटेंड कर सकी due to the internet problem or due to the electricity problem, or even the whole Karachi was like a swimming pool. So in such a case, it was very difficult. लेकिन तमकीन, remember us in prayers, and yes, सारी के सारी classes that are already been uploaded on YouTube. So please continue that. ठीक है, बार बार उनको गो थ्रू करो. एंड इन कमिंग वीक व्हेन वी विल बी स्टार्टिंग आवर क्लासेस, मुझे आप में से कुछ ऐसे वॉलंटियर्स चाहिए जो मेरे साथ उस कोर्स से मुझे ज्वाइन करें. One announcement which I made yesterday, ओके सर। but there are some announcements which I still wanted to make कि वो कौन से ऐसे students हैं, they believe कि they have not done sufficient enough, या उनकी अभी graphic design की प्यास अभी वैसी की वैसी ही है. I just want they are most welcome, they can still join me. And कुछ ऐसे हीरे उनमें से मैं कॉल करता रहूँगा. That is my exclusive for my as an guest speakers. वो मैं फिर आपसे इंडिविजुअली कांटेक्ट करूंगा और वो मुझे ज्वाइन करते रहेंगे. करेक्ट. इसके अलावा देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर न्यू अपडेट्स दैट आर कमिंग. एज आई टोल्ड यू yesterday कि I am already in the process of developing almost more than 100 courses also. दैट अब स्टेप बाय स्टेप हो जाएंगे. ज़ाहिर है, इट्स नॉट नो वे पॉसिबल कि हम लोग इतना कुछ ऑल ऑफ ए सडन वन गो में कर दें. ड्यूरिंग दिस जॉब अलॉन्ग विद these classes, and it's become very difficult कि मैं सारी की सारी चीज़ों को इन पैरल चला सकूं. बट स्टिल आई वांट कि मैं वो सारी की सारी चीज़ें टेक्नोलॉजिकल बेस की ट्रेनिंग्स, द वे आई टोल्ड यू इन द ग्राफिक डिज़ाइन, कि कितने डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज हैं जिनको आप चूज कर सकते हैं. उन कैटेगरीज की बेस पे आप अपने पोर्टफोलियोज बना सकती हैं, और वो सारी की सारी चीज़ें उनके ऊपर स्मॉल ट्रेनिंग्स वुड बी फ्रीली अवेलेबल इंशाल्लाह इन कमिंग डेज. ओनली स्टेप बाय स्टेप आती रहेंगी. सो स्टे इन टच एंड कंटिन्यू योर एफर्ट्स, और इसी तरह ही करते रहेंगे. असफन, प्लीज, आर यू देयर? अस्सलाम वालेकुम सर। यस, वालेकुम अस्सलाम. असफन, क्या हाल है आपके? मैं ठीक सर, अपना आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक. एंड बिल्कुल ऑफ कोर्स इट्स अ लास्ट सेशन. थोड़ा सा जरा वो मूड सा उस तरह बना हुआ है कि दैट मींस ट्रूली वी आर डिपार्टिंग, और नथिंग लाइक दिस. व्हाट डू यू थिंक? नो सर, नॉट एट ऑल। आपने नॉट खुद एट कहा ऑल. हम ग्रुप में भी आपके साथ हम कर सकते हैं, एक्सीलेंट, आपका नंबर हमारे पास है, हम कभी भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसी बात तो एक्सीलेंट, कोई भी नहीं है। excellent. That's the morale. That should be the morale of everyone. Inshallah we will stay in touch, और हम इसी तरीके से कोशिश करते रहेंगे. एंड आई वांट कि आप अपने अपने ब्रांड्स के ऊपर, असफंद यू स्पेशली, अपने अपने ब्रांड के ऊपर काम करते रहोगे. बिल्कुल सर, इंशाल्लाह। डन. थैंक यू वेरी मच असफंद. इंशाल्लाह वी विल स्टे इन टच. जी सर, थैंक यू सर। Excellent. Khansa, you there? Another icon personality in this course. Khansa. अस्सलाम वालेकुम सर। यस, वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। एक्सीलेंट. मैं जल्दी जल्दी में क्योंकि सबसे पूछता जा रहा हूँ, इसलिए आई एम प्रीटी श्योर कि जिस तरीके से आपने पार्टिसिपेट किया और जिस तरीके से आप डिफरेंट चीज़ों को फॉलो करती रही, दैट वाज अ काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर एवरीवन.
थैंक यू बिलीव सर। यू मी, मुझे ऐसे ही स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं, बिकॉज इट सम टाइम इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं सारी के सारी चीज़ों को या उस मोटिवेशन लेवल को अप करूं. सो आई अप्रिशिएट टू ऑल ऑफ दोज के जो मेरे साथ इस एम को लेकर कुछ ना कुछ काम करते रहे, ग्रुप्स में अपडेट करते रहे. सो सारे के सारे आपकी बनाई हुई चीज़ों को थम्स अप करते रहे, मीन्स दैट यू आर डूइंग ग्रेट वर्क. थैंक यू सर। थैंक यू वेरी सर मच फॉर ज्वाइनिंग. क्रिएटिविटी तो हर एक के अंदर होती है, क्रिएटिविटी हर एक के अंदर होती है, लेकिन बस ये कि उसको एनहांस करने का तरीका होता है। आपने उस चीज़ को एनहांस किया है, तो जिसकी एब्सोल्युटली, वजह से हमने सीखा है। बहुत बहुत बिल्कुल आपने एब्सोल्युटली सही कहा. हर इंसान में अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी हुई है. देयर इज नथिंग, कुछ स्पेशल चीज़ नहीं है जो मैंने कुछ पोरन की, ये हर इंसान के अंदर होती है. इट इज़ जस्ट के उसके अंदर की एड्रेनलिन को, जो अंदर की वो ताकतें हैं, उनको आप थोड़ा सा ज़रा झंझोड़ें और जगाएं और फिर उनको पुश करें, फिर देखें स्काई इज द लिमिट्स, फिर इंसान कैसे सारा कुछ सर कर जाता है. Thank you very यस much, सर। Kamsa, for joining. It is indeed great pleasure and honors to have you on board. थैंक यू सर। Okay, Ji. So let's move to the last, and I just do not want to leave Mamuna Nawal, Ma'am Javeria, Fiza Gulfam, Yaqeen Kare, Farah Saeed, Azra Ayub, and these are just great. And I just want कि हम जल्दी से सबसे पहले जो आज की सबसे लास्ट पर्सनालिटी थी जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम उनसे सबसे पहले उनसे start करेंगे, लेकिन then I thought no, it's better that we should start or we should end from that, and that is Zainul and Hassan. Zainul and Hassan, please, I would request you to unmute and give us your thoughts. अस्सलाम वालेकुम सर। Yes, वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप ठीक हैं सर? Alhamdulillah, excellent. So yesterday you have posted a video of your brand also, जिसके ऊपर आपने अपना काम यस start सर। कर दिया. Correct. So यस that सर। is one thing. एक्चुअली And moreover, I'm still waiting for that white paper जिसके ऊपर आपने गुले यास का last idea मुझे send करना सर, है. एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट फाइंड द वाइट पेपर इन माय होम, तो फिर मैंने इसको पीएनजी में कन्वर्ट किया हुआ था, तो Okay, वो मैं सेंड करने लगी, बट वो हुआ नहीं, वो ब्लैक हो जाता शायद मोबाइल की वजह से, okay, या ईमेल में तो वो ठीक रहता है, लेकिन मोबाइल में आके ब्लैक हो जाता है, okay. तो Let me tell you. आई डोंट नो। Let me tell you. देखो, idea is very good. Only the problem is with the execution. जो यस सर। आपने ब्रांड का आइडिया लगाया ना, उसका उर्दू में फॉन्ट्स एंड समथिंग लाइक दिस, दैट वाज अमेजिंग. जी सर। मतलब समहाउ अगर कोई मुझसे पूछता तो शायद मैं उतना अच्छा मैं भी ना बना पाता, एंड दैट वाज जस्ट अ ग्रेट आइडिया. लेकिन द यस। प्रॉब्लम वाज ओनली कि यू पिक द रॉन्ग टूल फॉर द डेवलपमेंट. ओके ठीक है ना? सो सर, फोटोशॉप में नहीं हो सकता था यस ये? फोटोशॉप, लेकिन फोटोशॉप में टूल कौन सा यूज किया आपने? सर, मैंने तो पहले उसको पीएनजी करके उसको बैकग्राउंड रिमूव किया है, वो कौन सा वाला टूल होता Yes, है, now you आई have to डोंट आई make डोंट it रिमेम्बर digitized. दैट। ये जो making of that picture to digitize है ना, that is जी something which I want कि मैं जल्दी से इसका एक छोटा सा सेशन लगाऊं. Let's say कोई about 20 to 30 minutes या का एक रिकॉर्ड सेशन ऑन करूंगा, उसकी रिकॉर्डिंग करूंगा और वो रिकॉर्डिंग करूंगा सेंड सारे के सारे स्टूडेंट्स को, सब के सब ग्रुप में, ताकि जो जो दैट वुड बंदे बी सो नाइस ऑफ यू। उर्दू पे काम कर रहे हैं ना, उनके लिए ये एक काइंड ऑफ वो चीज बन जाए. लेकिन चलें, अगर आपके यस पास सर। उर्दू वाला नहीं है तो यू शुड हैव बीन टेलिंग मी अर्लियर, मैं आज सबके साथ शेयर कर देता. बट एनीवे, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ठीक ओके। है जी. ओके दैट्स अ सर। ग्रेट थिंग. एंड सब के सब वो स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग जैन, इंक्लूडिंग अब्दुल्ला, अफरोज, एहसन, एमन, अनीका ताहिर, अनम, यस सर। अनम फातिमा, अनम जावेद, अरशद, असफन, अजरा, फरा सईद, फिजा गुलफाम, हाद खान, मैम जवेरिया, खनसा, मैमुना नवाल, मनाल काशिफ, एंड मॉम एंड किड, आई डोंट नो, मैं अगेन भूल गया नाम. Anyway, you will be again join me into the next session जो कि next week से start हो रहा है. So I would request कि आप मुझे contact करना after the class या after this weekend in Monday वाले दिन. ठीक है जी. And then नूरुल हुदा, कुरतुल ऐन, आर मैं फिर भूल गया नाम, रिदा, साइमा, the great आलिया, तमकीन रफीक, and
all those great participants. I'm pretty sure कि आज कोई थोड़े से students कम हैं due to multiple reasons. I have found some of the requests के unfortunately आज हम join नहीं कर सकेंगे, but that are approximately 10. So that comes to around 40, somewhere around 40 के करीब हमारी total conclusion थी जो आज का chapter था. So before we depart today, आज हम एक दो तीन चीज़ें जो मैं आप लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कंफर्म करना चाहता हूँ. दिस क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान एयरफोर्स. दिस क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान एयरफोर्स फिनिशिंग स्कूल के जिन्होंने मुझ पे ये बिलीव किया एंड दे गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं ओपनली आके और इंस्टीट्यूट का नाम लेकर और आप तमाम लोगों से ओपनली डिस्कशन कर सकूँ. ठीक है जी. सो अल्लाह ताला जो जो कुछ इसके पीछे जिन जिन लोगों का एफर्ट्स हैं उन तमाम को अल्लाह ताला जज़ा दे, क्योंकि एजुकेशन और इम्पार्टिंग एजुकेशन इज़ ऑलवेज एक सदका और जज़ाकुमुल्लाह खैर वाला काम है. ठीक है जी. ये वो सिलसिला है जो कि कभी भी नहीं रुकता. इंशाल्लाह ये ऐसे ही चलता रहेगा. मोर ओवर I would request everyone to please, now you all are my ambassadors. हमारे आने वाले सेशंस में आई वुड रिक्वेस्ट कि हम वो तमाम आपको फॉरवर्ड करेंगे अपने डिफरेंट जो सेशंस आने वाले सेशंस हैं उन तमाम की एडवर्टीजमेंट्स. आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपने सर्कल में अपने जान पहचान वालों में उन तमाम को भिजवा दें, सो दैट कि आपकी मदद से अगर कोई बंदा और बिल्कुल इस तरह की कुछ हद तक अच्छी एजुकेशन लेना चाहता है तो वो ज़रूर ले लें. Right. So, dear students, thank you very much for joining me today's session. Before we end, I would request that please do remember me in prayers. My name is Hameed Asghar, and you can join my institute, that is Institute of Freelancing, and hameedasghar@gmail.com my address, and hameedasghar.com is my website address. And thank you very much for joining me today's session. See you then, inshallah. जिंदगी रही तो फिर मिलते रहेंगे, मुलाकात करते रहेंगे. However, we can still join on WhatsApp group. Thank you. Allah Hafiz. Bye bye.